Yeah, hello everyone. This is your English teacher Manoj, and in this video, we will read and understand the chapter 1 from your book Gulmohar, An Uncomfortable Bed. This chapter is about a boy who went to spend a few days with his friends. But the way he was greeted there, the way he was welcomed, his friends gave him a grand reception. So all these activities by his friends made him very suspicious that his friends were going to play some trick on him. They were going to make him fool. So to avoid that, he unknowingly makes himself a fool. So how? For this, you need to read the complete story. So let's get started from the para 1. So it was autumn time and the narrator here, he went to spend a few days with his friends in Picardy. Picardy is a place in France. अब जो narrator के friends थे, they were very fond of practical jokes. Practical jokes means the jokes okay which are played to make people fool or to amuse others. And here the narrator says, वो कहते हैं, I don't care to know who people who are not. His friends were fond of practical jokes and he didn't care to know about other people, whether they like to play jokes or not. Now let's move to pair number 3. When I arrived, they gave me a grand reception, which at once made me rather suspicious. तो जैसे नैरेटर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हिज फ्रेंड्स, तो उसके फ्रेंड्स ने उसे एक बहुत बड़ा वेलकम दिया, एक रिसेप्शन दिया, एंड दिस मेड मी सस्पिशियस, और इससे जो नैरेटर है वो काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है. दे चीयर लाउडली, एम्ब्रेस्ड मी एंड मेड मच ऑफ मी. तो उन्होंने सेलिब्रेशन किया, दे एम्ब्रेस्ड मी, दे हग मी, एंड दे रियली गिव मी अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस as if they expected to have great fun at my expense. तो मतलब they gave me a lot of importance और ऐसा लग रहा था that they wanted to have great fun with me. So I said to myself, look out, old ferret. They have something in store for you. Now I was doubtful, okay, so मैंने खुद से ही कहा, hey, you will have to be very careful and they have planned something for you. They have something in store for you. मतलब वो उनके पास में तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, वो तुम्हारे साथ में कुछ करने वाले हैं. So during the dinner, the mirth was excessive. अब it was dinner time और जो mirth means laughter, okay. So now his friends were laughing a lot. I thought here are people who are really amused to amuse. मुझे लगा ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा amused हैं, entertained हैं, happy हैं, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हैं, they are too amused. There does not seem to be any reason for so much mirth, and he did not see any sense of so much of laughter. तो नैरेटर कहता है कि ऐसा मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा है देखकर that they should be laughing aloud. They must have planned some good joke. Surely I am to be the victim of the joke. Attention. So now he was certain that they have planned some joke for me and I will be the victim, और मैं उनके इस जोक का विक्टिम बनूंगा. So now he alerts himself. जो नरेटर है, जो लड़का है, वो अपने आप को अलर्ट कर लेता है. The entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion. और पूरी शाम हर कोई बहुत ही ज़्यादा exaggerated fashion में, एक बहुत ही abnormal way में हंस रहा था. Just as a dog can smell whatever it is hunting, I could almost smell a practical joke in the air. So now the narrator says कि जैसे एक डॉग है ना अपने 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 प्रे को स्मेल कर लेता है when it is hunting. So I could also smell something. I could also smell a practical joke which is in air, right? Which will be played on me. But what was it? अब उस लड़के का क्वेश्चन क्या था कि what joke are they going to play? I was watchful, I was restless, तो मैं बहुत ही careful था, and I could not tolerate, मैं बहुत ज़्यादा restless था,
I did not miss a single word or a meaning or a gesture. So I was watching my friends, okay, I didn't uh, miss a single word when my friends were talking. Okay, I did not miss any gesture made by them. Everyone seemed to be a suspect, and I even looked distrustfully at the faces of the other guests. So वहाँ पे हर कोई सस्पेक्ट लग रहा था. एवरी वन सीम टू बी अ सस्पेक्ट. ओके, मुझे लगा शायद ही इज प्लानिंग फॉर समथिंग. एनी वन. आई लुक्ड I looked at the faces of the guests over there with suspicion. और वहाँ पर जो बाकी गेस्ट थे मैं उनको भी सस्पिशन की नज़र से देख रहा था, संदेह की नज़र से देख रहा था. So now the hour struck for going to bed. The whole household came to accompany me to my room. Now it was time to sleep. और जो पूरा हाउस होल्ड था वहाँ पर जो बॉयज़ थे ओके दे केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम. और वो मुझे मेरे रूम तक छोड़ने के लिए आते हैं. So I wondered why have they come to accompany me to my room? They called to me good night. अब उन्होंने मुझे good night बोला. I entered my room, shut the door, and remained standing without moving a single step. So as soon as I entered my room, मैंने दरवाजे को बंद किया और खड़ा रहा. I did not move a single step, and I had a candle in my hand. मैं उस कैंडल को हाथ में लेके खड़ा हुआ था. I heard people laughing and whispering in the corridor, and I still could hear people who were in the corridor. They were laughing and whispering. वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे. Without doubt, they were spying on me. मुझे लगा कि वो जो लोग बाहर कॉरिडोर में हैं, they are spying on me. वो मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हैं. So I cast a glance round the walls, the furniture, the ceiling, the hangings in the floor. So I looked around. I looked at the walls. मैंने walls को देखा, furniture को देखा, ceiling को देखा, hangings को देखा. I looked around. I saw nothing to justify suspicion. लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं. I heard persons moving about outside my door. And still मैं लोगों को सुन पा रहा था. They were moving outside my door. I had no doubt they were looking through the keyhole. अब मुझे लग रहा था कि वो जो बाहर लोग हैं, friends हैं, they are looking through the keyhole. वो keyhole से मुझे देख रहे होंगे. Okay, then an idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in the darkness. अभी अचानक से मुझे एक आइडिया है कि मेरे हाथ में जो कैंडल थी, राइट, इट वाज गोइंग आउट, वो बुझने वाली थी, एंड दैट वुड लीव मी इन द डार्कनेस. और कैंडल के बुझते ही मैं अंधेरे में हो जाऊंगा. So I went around the room and lighted all the candles that I could find. So I went around the room और जो रूम में जो कैंडल्स थी मैं उन सबको लाइट कर दी. After that I cast another glance around me without discovering anything. और फिर से I looked around, I cast a glance around me, but I did not find anything. अब आगे I moved with short steps, carefully examining the room. अब मैं बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में I was moving carefully. I was examining the room. मैं रूम को examine कर रहा था. Nothing. I inspected every article one after the other. So I did not found anything at all. I went over the window. The shutters, large wooden shutters were open. So मैं विंडो के पास में गया. तो वहाँ पर विंडो के शटर्स थे, बड़े बड़े वुडन के शटर्स थे, and they were all open. I shut them with great care. मैंने विंडोज के शटर्स को बंद किया बहुत ध्यान से, and then drew the curtains. और फिर मैंने curtains को ड्रॉ कर दिया. Enormous velvet curtains and placed a chair in front of them. तो बहुत बड़े बड़े velvet के curtains थे, उनके सामने मैंने चेयर को भी रख दिया. So as to have nothing to fear from outside, ताकि मुझे अंदर से कुछ डर ना लगे बाहर से. Then I sat down cautiously. The armchair was solid. I did not dare to get into the bed. अब now finally okay, बहुत while being very cautious, मैं नीचे बैठ जाता हूँ. और जो आर्म चेयर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. इट वॉज वेरी सॉलिड. आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड. लेकिन फिर भी अभी मेरी बिस्तर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. तो बच्चों यहाँ पे जो लड़का है नरेटर, उसे लग रहा है दैट ही माइट बी प्लेड एनी ट्रिक अपॉन हिम एनी टाइम. His friends have planned something
they have perhaps uh, hidden something in the room to make him fool, to make him stupid. So I could not dare to get into the bed. अभी भी मेरी बिस्तर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. However, the night was advancing and I finally came to the conclusion that I was being foolish. तो फाइनली जो रात थी वो बढ़ती जा रही थी, इट वॉज एडवांसिंग, और फाइनली मैं एक डिसीजन, एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ दैट नो, देयर इज नथिंग एक्चुअली आई वाज बीइंग फूलिश, बस मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. आई वाज सर्टेन दैट माय फ्रेंड्स वर स्पाइंग ऑन मी, लेकिन मुझे यकीन था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे वर स्पाइंग ऑन मी, waiting for the success of whatever joke they had prepared. And the friends, who were spying on me, and they were waiting for the moment, they were waiting for the success of their plan. But in that case, they must have been laughing their heads off at my terror. लेकिन साथ के साथ जिस तरह से मैं डरा हुआ हूँ, वो मेरे टेरर को देखकर भी हंस रहे होंगे. So I'm already being foolish. I could not let them have so much fun at my expense. अब यहाँ पे जो नरेटर है, लड़का है, वो कहता है नो, आई वॉन्ट लेट देम लाफ एट माई एक्सपेंस. मैं उन्हें अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा. So I made up my mind to go to bed. Finally, I decided that now I would go and sleep in the bed. लेकिन जैसे ही but the bed was particularly suspicious looking. अब जैसे ही he decided to go into the bed, तो उसने जैसे ही नायटर ने बेड को देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा suspicious लग रहा था. उसे लग रहा कि no, no, there is something in the bed. I pulled at the curtains, जो they seemed to be secure. मैंने curtains को pull किया. They were all fine. All the same, there was danger. There must be. लेकिन मुझे जब when I was pulling the curtains, मुझे लग रहा था कि शायद danger होगा. There must be some danger. Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead. तो मुझे लगा कि जैसे कि मैं when I would be drawing the curtains, तो ऊपर से मेरे ऊपर पानी आके गिरेगा, and I would be made fool. Or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. और शायद मुझे ये लगा कि इफ़ आई वुड लाई इन बेड, अगर मैं बिस्तर पे लेट जाऊंगा, तो जैसे ही मैं आई वुड स्ट्रेच माई सेल्फ आउट, जैसे मैं अपनी अंगड़ाई लूँगा, अपने आप को स्ट्रेच करूँगा, तो जो क्या होगा, द जो बेड होगा दैट वुड बी ब्रोकन, वो टूट जाएगा, एंड आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर, और मैं फ्लोर पर आकर गिर जाऊँगा. I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced. अब now I was very terrified, मैं डरा हुआ था. तो I reminded of all the practical jokes that I have ever experienced. अब मैंने उन सब practical jokes के बारे में एक तरह से याद किया, उनको रिमाइंड किया जो अब तक मेरे साथ में हुए थे या मैंने एक्सपीरियंस किए थे. And I did not want to be caught. Oh, certainly not, certainly not. और वो यहाँ पे he decides that he did not want to be caught. वो पकड़ा जाना नहीं चाहता था, ठीक है, राइट. ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट दैट कि उसके फ्रेंड्स उस पर कोई प्रैक्टिकल जॉब प्ले करें एंड ही वुड बी कॉट. देन आई सडनली थॉट ऑफ a precaution which could ensure my safety. I caught hold of the side of the mattress carefully. फिर मैंने एक प्रिकॉशन के बारे में मुझे ख्याल आया, शायद जो मेरी सेफ्टी को सिक्योर कर सकती थी. सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया बच्चों, आई caught hold of the side of the mattress carefully and very slowly drew it towards me. तो यहाँ पर जो उस पर मैट्रेस पड़ी हुई थी बेड पे, मैंने उसका एक किनारा पकड़ा और उसको बहुत स्लोली, बहुत केयरफुली मैं अपनी तरफ ड्रॉ करने लगा. इट केम अवे followed by the sheet and the rest of the bedclothes. So that mattress came away when I pulled it. और उसके साथ में शीट और जो बेड क्लॉथ थे, बिस्तर पर जो और कपड़े पड़े हुए थे, they all came along. I dragged all these objects into the very middle of the room. And now what I did, मैंने इन सब ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे लेकर आ गया, रूम के बीच में लेकर आ गया. I pulled them all in the middle of the room. There at some distance from the bedstead that I could not rest, and the corner which had filled me with such an anxiety.
So why did he pull all the clothes in the middle of the room? Because he did not want to sleep in bed, and the corners were uh, dark. The corners of the room were dark, so he did not want to be uh, very close to the corners. So that's why he dragged all the clothes in the middle of the room. I made my bed all over again as well as I could. तो फिर से मैंने है ना अपना बेड बनाया. So now he decided that he would be sleeping on the floor. And then I extinguished all the candles. और उसके बाद में जो सारी candles जल रही थी मैंने उनको बुझा दिया. And groping my way to my newly made bed on the floor, I slipped under the bedclothes. और अपना रास्ता बनाते हुए, because now as soon as I extinguished the candles, the room was dark. So I somehow made my way to my newly made bed, और मैं I slipped under the bedclothes, और मैं उन bedclothes के अंदर एक तरह स्लिप कर जाता हूँ. to sleep. And for at least another hour I remained awake, starting at the slightest sound. And now still he was not able to sleep, and for another hour he remained awake. वो जागा रहा, सो नहीं पाया, and he would be moved by the slightest sound. अगर कमरे में कोई भी आवाज़ होती तो वो डर जाता. Everything seemed quiet in the house. I fell asleep. And when everything was quiet in the house, तो वो सो जाता है, उसकी आँख लग जाती है. I must have been in a deep sleep for a long time. All of a sudden, I was awakened with a start by a heavy body tumbling down right on top of me. तो उसे लग रहा है that now I must have been in a deep sleep. अचानक से all of a sudden, okay, तो मैं जाग जाता हूँ. I was awakened with a start. तो मुझे लगा, I felt that a very heavy body was tumbling down on top of me. एक बड़ी सी बॉडी मेरे ऊपर आकर गिर जाती है, लुढ़क रही थी. At the same time, I received on my face, my neck and my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain. और तभी at the same time what I received a burning liquid on my face, on my neck, and on my chest, and this made me utter a cry. और मैं दर्द से चिल्लाने लगा. And a dreadful noise, as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down. और तभी अचानक से एक आवाज़ होती है साथ के साथ ही कि जैसे है ना जो एक साइड बोर्ड होता है जिस पर प्लेट्स वगैरह डिशेस रखी होती हैं, जैसे कि वो सभी नीचे गिर गई हों. सो दिस नॉइज़ ऑलमोस्ट डिफेंड मी. इस नॉइज़ ने मुझे डीफ ही कर दिया था. The weight that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving. अब जो वो weight मेरे ऊपर गिरा था, the heavy body, तो that weight was crushing me. वो मुझे क्रश कर रहा था. It was not letting me move my body. वो मुझे मूव नहीं करने दे रहा था. I was getting smothered beneath it. So I was not able to breathe under that heavy weight. I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. तो मैंने अपने हाथ को स्ट्रेच किया. I wanted to see कि ऑब्जेक्ट क्या था जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था. I wanted to feel that with my hand. So I felt a face. तो जब मैंने हाथ को अपने स्ट्रेच किया और फील करने लगा तो मैंने एक फेस को फील किया. Nose and whiskers. And with all my strength I struck a blow at this face. तो मुझे रियलाइज़ हो गया that it was a man. ये कोई आदमी था. तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में I struck a blow at his face. मैंने उसके फेस पर एक पंच मारा. But I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the soaked sheets. लेकिन तभी अचानक से जैसे ही मैंने उसको पंच किया तो मुझे भी वो स्लैप्स मारने लगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जम्प्ड आउट स्ट्रेट ऑफ माई बेड. और मैं अपने उस गीले बेड से जिस पर वो लिक्विड गिरा था तो मैं उछलकर अपने बेड से बाहर आता हूँ. द
door of the room was open. I rushed into the corridor in my night shirt. अब देखिए उस रूम का जो डोर था it was open और जैसे I was out of that man's reach तो मैं सीधा कॉरिडोर में चला जाता हूँ through the door. Oh heavens, it was broad daylight. The noise brought my friends hurrying to the spot. अब जैसे I was out मैंने देखा oh my god, it's daylight. ये तो दिन का समय है. अब जो नॉइज़ हुआ था सो दैट नॉइज़ हैड ब्रॉट हिज फ्रेंड्स टू द स्पॉट. अब वो सारे उसके फ्रेंड्स उस शोर को सुनकर वहीं उस स्पॉट पर आ जाते हैं. एंड एज आई लुक्ड इनटू द रूम विद देम आई फाउंड लाइंग ऑन माई इम्प्रोवाइज्ड बेड डिस्मेड वॉलेट. और जैसे ही मैंने अपने रूम में वापस देखा अपने फ्रेंड्स के साथ में सो व्हाट डिड आई फाइंड, मैंने क्या देखा, आई फाउंड लाइंग ऑन माई इम्प्रोवाइज्ड बेड. और जो मैंने बेड बनाया हुआ था उस पर एक वॉलेट, एक बहुत ही डिसमैलेट वॉलेट लेटा हुआ था. अब देखिए वॉलेट मतलब क्या होता है, एक वो कहते हैं ना वॉलेट मीन्स लाइक अ सर्वेंट, अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर अ पर्सनस नीड. तो डिसमेड मतलब एक तरह से शॉक्ड, अपसेट. तो मैंने देखा कि उस मेरे उस बेड पर एक उदास, एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड एक सर्वेंट लेटा हुआ था. वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी ही हैड ट्रिप्ड ओवर द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. अब जब वो मेरे लिए मॉर्निंग टी के लेकर आ रहा था तो ही वॉज नॉट अवेयर कि दैट आई हैड लेड माई बेड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. तो वो उस बेड से उसकी ठोकर लग जाती है एंड दैट्स वाई ही फेल ओवर मी. और इसी वजह से मेरे ऊपर गिर जाता है और उसने मेरा ब्रेकफास्ट मेरे फेस पर गिरा दिया. दैट वॉज टी. वो जो वो बर्निंग लिक्विड था इट वॉज एक्चुअली टी. I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room. अब देखिए यहाँ पे अब as you can see class here जो लड़का था narrator he wanted to avoid being fooled by his friends, लेकिन वो unknowingly वो जिस तरह से प्रिकॉशंस लेता है बहुत अलर्ट हो जाता है. सो हिज प्रिकॉशंस, हिज अलर्ट, ओके, एंड हिज फॉलिशनेस मेड हिम फूल हिमसेल्फ. उसकी प्रिकॉशंस की वजह से ही वो अपने आप को खुद एक फूल साबित कर देता है. ही बिकेम्स I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke. वो कहता है कि जो precautions मैंने ली थी उसी वजह से right they made fun of me. I was caught by the practical joke which I was trying to avoid. Oh, how they all laughed all that day. And now, unknowingly, unwantedly, I gave my friends a reason to laugh throughout the day. So thank you everyone. This was the chapter 1, An Uncomfortable Bed. So thank you everyone. Have a good day.